Hi guys, Sunny here, Gandhiji.io. Welcome, Namaste, Jiyanu. I'd like to talk today. I saw a video from Amin, blockchain Bhakt again, and I think it's about time we got this out in the open. Amin, you know, let's talk about this together, and I'd like to just go through your video today. And you know, I hope you've grown up enough, Amin, to give me a proper response to this video this time. And let's just see, I've got you here. I'm going to listen to you, Amin, what you've got to say, and I'll try and respond and give you a proper answer, okay? So let's try this. कुछ बड़े यूट्यूबर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पोंजी स्कीम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे गांधी जी कॉइन. चलो उसको ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट पोंजी स्कीम बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कोई उसमें धांधली नहीं कर सकता है. Alright, Amin. So you've admitted, first of all, that we're honest, open and transparent, which I thank you for. Thank you for at least saying that much. I know you're a bit you're a bit uncertain, and you seem to think that this is a Ponzi scheme. So we're going to talk about that today, but I'll give you the chance to explain, and let's go through your video a little first and see what it is exactly that you've got to say. बट घूम फिर के वो तो पोंजी स्कीम ही है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं है. दैट इज अ मनी सर्कुलेशन. Okay, so one of your points is that there's no product and it's just money circulation. I'll make a note of this because I'm going to come back and I'm going to clear every single one of these points for you. Amin. कि नए लोग आएंगे तो अपन ज़्यादा भाव में बेच सकते हैं. So just like Bitcoin or any other cryptocurrency, as new people purchase, the price will go up. And your issue with that is, Amin? It doesn't have any product use case. We have the exact same use case as Bitcoin. So if you look at the use case of Bitcoin, it's exactly the same for Gandhiji's IND token. There is nothing in it. Just नए लोग आएंगे तो भाव बढ़ेगा और तभी उसको बेच सकते हैं. तो ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पोंजी स्कीम कह सकते हैं. It's not actually a Ponzi scheme though, is it, by definition? But we'll go through that in a little while, Amin. बट घूम फिर के वो पोंजी स्कीम ही आती है. No, it doesn't. कुछ लोग बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं. तो तुमने कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है क्या? Yes, look here. चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बट देयर इज नथिंग इन इट. What do you mean there's nothing in it, Amin? If there's nothing in it, then why don't you go through line by line and explain to the people exactly what is in it? It is a money circulation. अभी FOMO 3D में. Hold on, let's just stick to Gandhiji a minute. FOMO 3D, I warned you about that. You made your mistakes. It's not my fault that you didn't read it properly. मिस्टेक होता है, हुआ. हॉलमार्क ऑफ पोंजी स्कीम है. अभी गांधी जी में उतना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है. Thank you very much, Amin. There's no misleading information in Gandhiji is the correct statement. So, by technical definition, as there is no misleading information, that could be one point that we use to argue that this is not a Ponzi scheme by definition. I want you to remember that, Amin, for a little while, okay? स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेकिन नॉर्मली पोंजी स्कीम में क्या होता है, इतना ज़्यादा कंटेंट डालेंगे और ऐसा कंफ्यूज कर डालेंगे. स्नेक बेयर. So you're talking about FOMO 3D. I mean, I'll be honest with you. I agree with you. FOMO 3D is a Ponzi scheme. By technical definition, it is a Ponzi scheme. If you look carefully at the Gandhiji project, you will see that we didn't attach any FOMO's 3D style contract or jackpot game style contract to our contract. We are the only project that didn't. Everybody else ran
to attach a Ponzi scheme to their smart contracts. But the Gandhiji project, we had the foresight to know. We saw that that was a Ponzi scheme where a lot of people would just lose their money. So we didn't connect it to our contract. Everything you've got to say about FOMO 3D is absolutely nothing to do with Gandhiji or Gandhiji's concept. फिर घुमा फिरा के रहता है उसमें, सीधा सीधा बात नहीं होता है, तो ज़्यादा नॉइज होता है उसमें. जो फिर क्या होता है, ज़्यादा नॉइज में आप मेन पॉइंट चेक करना भूल जाते, मतलब मिस हो जाता है वो. So it took you 5 months, Amin, to check the points of the Gandhiji project, where you've made videos on it, so many videos calling it a scam, calling it a Ponzi, with no research. All you seem to say lately in your videos is, I need to research this, you need to research that. But there's no evidence of you ever doing any real research. You put money into FOMO 3D, mate, with thinking you could sell your keys. So did you research that? Did you research FOMO 3D more than you researched Gandhiji project? Because apparently you haven't put any money in Gandhiji project, but you were happy enough to put your money into FOMO 3D with no research. क्योंकि इतने सारे पॉइंट दिए, वो सारे पॉइंट चेक करते करते तुम थक गए और ये जो मेन पॉइंट रहता है वो ही मिस हुआ. तो वैसा होता है. हॉलमार्क ऑफ पोंजी स्कीम इज इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रहता है. So again, just to point out another point that we could argue Gandhiji is not a Ponzi scheme is because, as you quite rightly said, there is no misleading information on the Gandhiji website. There's no kumar frying, like you put it, of people. If you go and find any misleading piece of information on the Gandhiji.io website and come back to me, we'll update it. If you find any, there isn't any though, Amin, because we're not a Ponzi scheme and we're not here to cheat anybody. अभी ये जो सेमिनार वाले पोंजी स्कीम है, वन कॉइन, एटीसी, टीसीसी, ये लोग क्या करते हैं, जो भी आदमी आएगा, एक तो सारे नूब रहते हैं, वो लोग को कुछ समझता नहीं है, वो लोग आते हैं उसमें, तो वो लोग को फालतू का इंफॉर्मेशन इतना देते हैं. अरे ब्लॉकचेन, अभी एमकैप का मैंने देखा, ब्लॉकचेन इज रेवोल्यूशनरी, वो जो बात कर रहा था वो जेनरिक बात कर रहा था. That it has nothing to do with his product. Exactly. लेकिन वो जो सेमिनार में लोग आए, उनको irrelevant इतना इंफॉर्मेशन फीड कर रहा था. I agree, Amin. इतना टाइम वेस्ट कर रहा था कि जो 100%. सुन रहे थे वो लोग थक गए. I'm with you, mate. आज चल बाबा, क्या करने का है, कितना इन्वेस्टमेंट करने का, चल ले. Brainwashing them into तो it. मेन हॉलमार्क पोंजी स्कीम का यही है कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते और इतना ज़्यादा मिसलीडिंग और जेनरिक इंफॉर्मेशन देते. अभी ये जो टीसीसी के गाय भैंसे मुझे बोलते हैं तुमको मालूम ही नहीं टीसीसी क्या है. अभी तुमको इतना समझता है तो तुम ही एक्सप्लेन करो ना. मेरे को समझता नहीं क्या, मेरे को वो तो इट इज़ वेरी अपेरेंट, वो तो दिख के ही समझता है. बिल्कुल. अभी एटीसी का जो वेबसाइट दिखेगा, अरे एटीसी कॉइन क्या है, अरे क्या वेबसाइट है. अगर वो एटीसी कॉइन का वेबसाइट पूरा डिटेल में चेक करेगा तो उसको लगेगा एटीसी कॉइन क्या माइंड ब्लोइंग कॉइन है. लेकिन वो कुछ भी कॉइन नहीं है, वो तो क्लियर कट चूतिया बनाने का धंधा है. उसने जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाला है, दैट इज ए जेनरिक information about blockchain and cryptocurrency. It has nothing to do with his product. What product? उसका प्रोडक्ट ऑसम कैसे है, उसका कुछ भी ये नहीं. वो जेनरिक इंफॉर्मेशन डालता है, लेकिन दुनिया में 80-90% लोग नूब है, गाय भैंसे है, जिनको समझता नहीं. तो इम्प्रेस हो जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, 1 घंटा फालतू का इतना भाषण समझा, उसने सुनाया, घुमाया फिराया, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोला नहीं, जेनरिक इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन वो सुनते सुनते कंटाला आ गया.
तो चल बाबा कितना इन्वेस्टमेंट करने का ले, मिलेगा ना 10% महीने का मिलेगा ना, ओके चलेगा। तो ऐसा ही जो पोंजी स्कीम वाले कंफ्यूज कर डालते। They do, mate. ऐसा नहीं कि तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा मतलब पोंजी स्कीम नहीं है। It is, यार। Alright, चल मान लेने हैं, let's go. Go on. तुम बोल सकते हो ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पोंजी स्कीम है। Transparent and honest scheme है, yes. लेकिन वो पोंजी स्कीम ही है क्योंकि It's not a Ponzi scheme. I'll prove it to you in a minute, but go on. मनी सर्कुलेशन है, कुछ भी नहीं है उसमें, चल देख लेने तो हैं। वो फालतू प्रोडक्ट हुआ। What about when you called it awesome technology? What happened to you that day? Do you remember? Or do you need me to pull the video out, Amin? When you researched and you actually studied and you almost understood what Gandhiji and proof of weak hands was supposed to be, you called it awesome technology. But the problem was, lalech aa gaya si. You decided, oh, I'm going to try this new FOMO one. You thought you were being clever, but no experience, Amin, in this field. You've not got the experience that I've got in this particular field. You're a good guy. Listen, I enjoy watching your videos, mate. I really do. I'll tell you more about it, but come on. सबके पास पैसे लिमिटेड है, तो किधर किधर डालोगे तुम? बिल गेट्स तो नहीं हो कि हर प्रोजेक्ट में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो, गूगल नहीं हो हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो। गूगल ने टॉर नेटवर्क पे $2 बिलियन डोनेट किए, या काफ़ी मिलियंस और बिलियंस डोनेट किए, अच्छा। क्योंकि गूगल के पास इतना पैसा है, दे कैन इन्वेस्ट ऑन थिंग्स विच आर एक्सपेरिमेंटल, विच आर साइंस फिक्शन। लेकिन तुम्हारे पास लिमिटेड पैसे है। Who are you teaching? चेक करके जो मेन प्रोजेक्ट है, जो रियली लग रहे फ्यूचरिस्टिक है, उसमें इन्वेस्ट करोगे ना। कि सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? नहीं सब नहीं। लोगों के पास पैसा लिमिटेड है, अच्छा, तो जो मेन प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें ही इन्वेस्टमेंट करना सही बात है। बिल्कुल। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मतलब ऐसा नहीं कि जेन्युइन प्रोडक्ट है। ओ यार, ये गांधी जी वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं मालूम नहीं। Amin, I like your point of view most of the time. I like the way that you're honest and open and that you speak your mind. No matter, you don't worry about what people will think about you. And I'd say about 80% of the time, I agree with what you say, mate. I agree with what you say. When I looked at all of the YouTubers, you were the one that I thought would more than likely understand this before anybody else because of your understanding of blockchain. That's why मैं तेरे मगर पे आ. It's not about your influence, it's not about anybody else, but I've got time to educate anybody who is willing to learn. And I thought you would get it, mate. I really did. I had faith in you that you would understand. मेरा इतना बड़ा नेटवर्क भी नहीं है, I know, जिससे इम्पैक्ट पड़े एक आदमी से। it's not about the impact. तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग के If पास that's how you look at time it, है। but you know, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, अभी सिर्फ उसको प्रमोट करना है, पैसा आ रहा है, चलो ठीक है। टाइम ही टाइम है। But didn't you check the smart contract? There's no administrator, or there's no ambassador. I'm not the owner. I don't get any benefit other than the same benefit that everybody else gets. There's no special clause for me. I'm just the same as any other investor in the system I'm in. और दूसरा कुछ काम भी नहीं है, तो ऐसा ही पकाते बैठो दूसरों को। My काम is swatch crypto. अभी ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में इमर्जिंग फील्ड है, मजबूत पैसा कमाया जा सकता है। एज ए इन्वेस्टर भी कमाया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत फट आएगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इसने बैन लगाया, इट इज इररिलेवेंट, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है इंडस्ट्री को। आरबीआई के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ गाय भैंसों को वो लोग भगा देंगे जो डर जाते हैं, अरे क्या हो गया, इलीगल है, मैं तो डर गया, अभी मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ,
मैं पैसे कैसे You're right, निकालूं, mate. You're वो right. सारे गायब You're ऐसे। right. I love it. You're right. और वैसे लोगों ने ये जो इमर्जिंग फील्ड है उसमें आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना डर लगता है। तो जॉब करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस लो, Good advice. लोन पे फ्लैट लो। दिस इज मेन स्ट्रीम रियलिटी, उसमें रहो। Yeah. डर लगता है तो क्रिप्टो करेंसी में क्यों आ रहे हो? बिल्कुल right, Amin जी. Well done. क्रिप्टो करेंसी इज द नेक्स्ट इज द फ्यूचर। बिल्कुल. हमेशा गैम्बल ही रहता है। Yeah. फ्यूचर क्या है किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन फ्यूचर में आरबीआई बैंक ये सब नहीं रहेगा, दैट इज 100% गारंटीड। It's लेकिन inevitable. बिटकॉइन रहेगा, इथेरियम रहेगा, या कौन सा क्रिप्टो करेंसी रहेगा, या कौन सा मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, या एचडीआर टोकन रहेगा, वो कोई भी नहीं बोल सकता है। सब लोग दाव लगा रहे हैं, कौन सा ये रहेगा, वो रहेगा, रिपल रहेगा, एचडीआर रहेगा, या ये रहेगा, इथेरियम रहेगा, बिटकॉइन रहेगा। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, नहीं सब बता लोग दाव लगा रहे हैं। Exactly. लेकिन 100% आरबीआई और बैंक नहीं रहेगा, ये तो Ethereum. कंफर्म है। I think Ethereum. सिस्टम What do you चेंज think, Amin? होती है, I know you like Ethereum. हमेशा चेंज होती है। पुराना सिस्टम वैसा ही रहेगा, उसमें अपग्रेड रहेगा होगा, वैसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट बंद हो जाएगा। आरबीआई वाले जो जॉब करते हैं वो लोग को पेंशन मिलने वाला था, वो पेंशन कुछ मिलने वाला नहीं है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है वो लोग का। एक टाइम के अच्छी खासी जॉब वाले गरीब हो जाएंगे और भिखारी हो जाएंगे, मेरे हिसाब से रास्ते पे आ जाएंगे, और वो खुशी का दिन होगा। I like a lot of the stuff you say, Amin. उसमें मीडिया पहले कैसा था, तुम 40 साल कोई कंपनी में जॉब करो और बाद में 60 के हो जाने के बाद तुमको मंथली पेंशन मिलता था। Yeah. वही आइडिया था पहले लोगों के दिमाग में कि एक कंपनी में जॉब करो, बाद में बुढ़ा होने के बाद पेंशन मिलता रहेगा। लेकिन जब ये आया फेसबुक, यूट्यूब, तभी जो मैगजीन था, इंटरनेट आया, जो भी लोग मैगजीन में काम करते थे वो लोग का डायरेक्ट जॉब चला गया है। मैगजीन अभी कोई खरीदता ही नहीं है। Yeah. वो लोग ने जो सपना देखा था कि मैं अच्छा खासा मैगजीन का बिजनेस था, मैगजीन का सेल्स अप ही अप जा रहा था, Yeah. अचानक इंटरनेट आ गया, मैगजीन का सेल डाउन हो गया। वो लोग ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैगजीन में इतना बड़ा मैगजीन और न्यूज़पेपर का कंपनी में काम करके मैं कभी भिखारी हो जाऊंगी, जॉबलेस हो जाऊंगी। इंटरनेट आया, मैगजीन वाला कंपनी बंद हो गया, जो भी स्टाफ था भिखारी हो गया, रास्ते पे आ गया। और जो सपना देखा था कि मैं 40 साल जॉब करूंगी और बाद में मेरे को मरने तक पेंशन मिलेगा, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। सिस्टम हमेशा चेंज होते रहता है। सिर्फ गाय भैंसे ऐसा सोचते हैं कि जो पुराना सिस्टम है आगे कंटिन्यू करेगा। पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो बड़ा स्केल में हो रहा है। Yeah. इसलिए अभी क्रिप्टो करेंसी में भाव गिरा है, बट इतना भी भाव नहीं गिरा है। जो भी 1-1.5 साल पहले आया था वो आज भी प्रॉफिट नहीं है, और ये टेम्पररी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ऑफ कोर्स आई एम नॉट द क्या बोलता है उसको, नॉस्ट्रेडामस। मिस्टेक होता ही है, क्योंकि अपन जो इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन होता है इट इज बेस्ड ऑन द करंट इंफॉर्मेशन। Very well said, Amin. आगे जाके Hats off to you, mate. At least for that, you're at least honest हो सकता है in that sense. But That's why I follow 100% you. आरबीआई और ये That's why I follow you. बैंक नहीं रहेगा, फिएट करेंसी नहीं रहेगा, ये 100% है। Yeah, I agree. और At some point. हाँ, फोमो 3D का जो था उसने इतना इररिलेवेंट कंटेंट उसमें डाल के रखा था, Just to make घुमा फिरा के yeah, स्नेक you're right. देर और कैलकुलेशन डाल के रखे थे, तो वो चेक करने में काफ़ी टाइम जाता है। और जो मेन पॉइंट था वो किधर भी नहीं लिखा था कि उसमें कीज बेच नहीं सकते। It was. फोमो 3D का वेबसाइट में किधर भी नहीं लिखा था It was, कि Amin. कीज बेच नहीं सकते। It was. जब भी मैंने चेक किया, Even if you look at with the keys, beats like उसका that. ये क्या है, वो
क्या Didn't you है look वो for the चेक key? किया. Didn't you see it in the contract? There's मुझे no. लगा कीज बेच सकते हैं What can you और say? बाद में So चेक करने के बाद Gandhiji is पता good. चला अरे कीज Proof of नहीं weak बेच hands is सकते. good. They ruined it with FOMO वो 3D. क्यों होता है? क्योंकि इतना ज्यादा irrelevant information रहता है They have कि in अपना FOMO टाइम 3D. वेस्ट हो जाता है Yeah. irrelevant information चेक करने में. And you FOMO'd in it, didn't you? जो You just भी put your money अभी in quick. ATC कॉइन का वेबसाइट पे जाएगा Yeah. वो तो इम्प्रेस हो जाएगा, अरे क्या कॉइन है, पर वो जेनरिक इंफॉर्मेशन है, उसका टाइम वेस्ट होगा वो इंफॉर्मेशन पढ़ने में. Yeah. और मिस जज होगा क्योंकि वो कंटेंट वो पढ़ रहा है जो वो एटीसी कॉइन दिखा रहा है. वैसे ही मैं जो कंटेंट पढ़ रहा था वो फोमो 3D दिखा रहा था और उसमें इसीलिए तो मैं ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चेक करने में ये करता हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन लिखा है इज इट ट्रू, ये ऐसा ही कुछ भी कॉपी पेस्ट किया है इंटरनेट से, गूगल सर्च मार के कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है. Yeah. वो फाइंड आउट करना मुश्किल रहता है. Well, you got to check. वो जो टीम है वो जेन्युइन है कि नहीं वो फाइंड आउट Check the कर source code, सकते हैं, isn't it? पर काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है. That's the मेन whole तो टीम point. ही है वो जेन्युइन है कि फेक है. You have to do your बाद research. में प्रोजेक्ट कंटेंट डिटेल्स पे आते हैं. Check it properly. काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है. I don't care how long it takes. You can जो put your money in, information check दिया it है, वो properly. correct है कि If you're नहीं, going to call something a वो scam, पहला check it वो properly. भी चेक करना पड़ता है. Yes, you got to check it properly. You know what, Amin? Well done, mate, at least. You know what? I continue to follow you because there's moments where I see your vision and I agree with you a lot. But I don't know if it's your ego or what it is that just can't allow you now to turn around and admit that you made a mistake. That, you know what? You didn't look properly at the Gandhiji project and you just went off on one. I would expect you, I mean, of all the people, to be able to man up and come and admit your mistake, you know. I got something for you here. I'm going to go through this with you now, Amin, yeah? Let's see. So I want to go through. Now this is, let me move me out of the way a little bit, yeah. So let's go through this, Amin. We got here US Securities and Exchange Commission. What is a Ponzi scheme? Yeah, let's go with that. What is a Ponzi scheme? So let's just go through that. A Ponzi scheme is an investment fraud. Investment fraud that involves payments of returns to existing investors from funds contributed by new investors. Okay. Ponzi scheme organisers often solicit new investors by promising to invest funds in opportunities claimed to generate high returns with little or no risk. In many Ponzi schemes, the fraudsters focus on attracting new money to make promised payments to earlier stage investors to create the false appearance that investors are profiting from a legitimate business. So, how is it that new investors in Gandhiji can earn returns from old investors? When old investors buy, sell, trade IND tokens, brand new investors into the system earn dividends from those people trading, from older investors trading. New investors can earn dividends from old investors. Hence, it's not a Ponzi scheme. It's not a pyramid scheme. It does not fit the model of a Ponzi scheme or a pyramid scheme. Now you talk about use case, that there's nothing in this. It's exactly the same use case as Bitcoin. It's a decentralized token economy. That is the use case.
It's one of the use cases for IND tokens. I can explain it in depth for you more and more, but let's do this one part at a time, Amin. I would like you to explain to me how Gandhiji, in detail, with some kind of evidence, how Gandhiji is a Ponzi scheme. I've explained to you how it's not, because new investors are not dependent on future investors to keep or make them any returns or profit. Not dependent. It is not a requirement in the Gandhiji system that new investors must come for those investors, for current investors, to earn returns. It's not a Ponzi scheme. So if you'd like to move on, Amin, and if you'd like to get over this, I'm not saying that you have to promote or anything like that. You were the one that made the video today calling out Gandhiji. So this is my response to you. You call it a Ponzi scheme. Here's evidence from the US Securities Agency that shows this is not a Ponzi scheme. Please provide me or our community now with any evidence that you have of any wrongdoing or any proof that this is a Ponzi scheme, as you keep calling it. I look forward to speaking to you soon, Amin, and Jai Hind.